So hi friends, I'm Dr. Anshul Bansal again joining you on this Unacademy platform. In today's YouTube session, we'll study about top 3 important topics of orthopedics for the NEET PG of 2021. Jaldi se we'll also discuss about these three topics, everything about these topics that is important for NEET PG examination. Okay, so as you all know, I am currently working as an orthopedic resident doctor in SMS Medical College, Jaipur, and here we'll discuss NEET PG, orthopedics for NEET PG, but also for the MBBS or Prof examination के लिए भी. So I will discuss orthopedics in depth here, focusing on the image based questions, the x-rays and the clinical scenario. So let's start today's lecture, and before starting today's lecture, I will quickly guide you through our paid subscription plans available for NEET PG on Unacademy. And first one is the plus subscription, in which you will get access to all of our live and recorded classes, the question banks formed by the topmost educators for the NEET PG in India, and you can compete in live tests and quizzes, study on any device of your choice, because we'll allow you to log in with multiple devices by same account. And also for the subscribers of 12 months or more, we'll be also providing you with the printed notes, and you can subscribe, and while subscribing you can use this code to get extra 10% off. The second one and the best one, not only on the Unacademy but on any digital platform, is the iconic subscription, where on extra may you'll get the prep ladder, in which you'll get access to all of the prep ladder, including its question bank, the video lectures, the grand test, the rapid revision courses, everything. And on Unacademy extra may you will get well structured live batch wise classes, as well as we'll give you individual assessment of every test that you give, so that you can find your lacunas and work accordingly. Okay, and you can use this code while subscribing for the iconic subscription to get extra 10% off. And keeping in mind the different sets of students focusing on different examinations like FMG or next year's NEET PG, or next or this year's NEET PG, we have started dedicated batches to these group of students, and you can subscribe for these courses and you can use this code to get extra 10% off. And as you all know, NEET PG 21 is around the corner, so we have formulated a special 1 month package, and it is the best. Personally speaking, also I would recommend you to subscribe to this package, because it gives everything that is required in the last 1 month for the NEET PG: the grand tests, the live quizzes, and the recent advances or the recent updates, as well as last minute tips and tricks, high yield MCQs, high yield subtopics, clinical scenarios, images, everything you will get in this package. So please go for it. It is available for just 4,500. Okay, and as I have told you multiple times that नीट पीजी क्रैक करने के लिए लास्ट 1 मंथ में यू शुड गिव ग्रैंड टेस्ट at least 3 to 4 work per week, and not only giving the grand test but analyzing it, reading its explanation of every question is very important. It is the best way to revise. So Unacademy has formulated its grand test series, and here it is the schedule of that series. So go and subscribe and please give grand test. And for the students who will subscribe for 12 months or more, we are running a limited time period offer, in which they'll get 2 months of this plan extra if they'll subscribe for 12 months or more. And for the MBBS students, we have started a 4-year subscription plans, and in which we are giving heavy discount for a limited time period. And like this iconic subscription is available for just 75,000 for the entire 4 years. Okay, so please go and subscribe, and I would like to suggest to subscribe for longer duration of plans, because here you can see the cost per month decreases significantly if you increase the duration of your plans. Okay, and please do attend the special classes. For that you just need to
install the Unacademy app and subscribe using my subscription code, and both of which are absolutely free. These are very good classes which gives you extra edge over the others, as well as they are very live interactive classes where you'll get a classroom like feel. You can uh, clear your doubts and interact with the educators, participate in the polls, as well as you can listen to the lecture anywhere anytime on your Unacademy app. And also we are running a special bugs bounty program in which if you find any inappropriate content in any of the educators videos, you can contact our team in the link given below, and if you'll find correct, you will be given exciting prizes and offers. Okay, so let's start today's lecture. Top 3 most important topics in orthopedics for NEET-PG. Let's crack NEET-PG with Unacademy. Okay, so top 3 जो important topics है NEET-PG के हिसाब से, first one is very important, that is your bone tumors. Okay, second one is your CTEV, and third one is your fracture supracondylar humerus. Okay, इन तीनों में से you can expect at least 4 to 5 questions in this year's NEET-PG in orthopedics. Very important these 3 topics. So NEET-PG के लिए क्या relevant है उसके हिसाब से we'll quickly revise these topics, because we have studied these topics already and we'll revise it for the NEET-PG. So let's start. And सबसे important and सबसे first topic जो है that is bone tumors. Very important. The most important topic in entire orthopedics for NEET-PG is your bone tumors. Okay, so please do read bone tumors before giving your NEET-PG examination. So bone tumor, as you all know, benign and malignant, there are 2 types of bone tumors, and most common tumor in bone is metastatic. Most common is metastatic, and most common primary is your multiple myeloma, as well as most common malignant primary is your multiple myeloma. और अगर आपसे पूछे कि most common benign tumor कौन सा है, तो the most common benign tumor will be your osteochondroma. ओके, एंड ये ध्यान रखना, जो बोन ट्यूमर्स होते हैं मोस्टली the affected population is young adults. Mostly the affected population is young adults. Okay, बहुत ही कम है जिसमें elderly population होती है affected, like multiple myeloma etc, but or the secondary osteosarcoma, but the most of the bone tumors में young adults ही affected population होता है. Okay, तो सबसे पहले we'll study about the benign tumors, that is osteoma. Osteoma benign tumor होता है, and इसकी खास बात होती है कि it is क्रेनियोफेशियल एरियाज में होता है, यानी फ्रंटल बोन और द फेशियल बोन्स यहाँ पे, एंड इट इज कंप्लीटली बिनाइन विथ नो मैलिग्नेंट पोटेंशियल, 0% मैलिग्नेंट पोटेंशियल, एंड जनरली अदर देन द कॉस्मेटिक reasons, the surgery or any intervention is not required. Okay, see, this is your osteoma in the craniofacial area, osteoma. ओके ना, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, देखो ऑस्टियोमा आ रहा है तो यानी इट विल बी बोन फॉर्मिंग. ओके, 2 टाइप के लीजन होते हैं, एक बोन फॉर्मिंग और एक लाइटिक लीजन, तो इट इज बोन फॉर्मिंग. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो बोन फॉर्मिंग विथ benign nature. ओके, एंड कॉमनेस्ट ट्रू बिनाइन ट्यूमर ऑफ द बोन लिखा है, बट कॉमनेस्ट आपसे सिंपली पूछे तो दैट विल बी ऑस्टियोसार्कोमा, एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन विल बी दी ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा. ठीक है, एंड व्हाट विल बी द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इन यंग एडल्ट्स, एंड मोर कॉमनली इट विल बी मोस्ट कॉमन इन द नी जॉइंट वाला एरिया, दैट इज proximal tibia is most common, followed by the distal femur.
Okay, there will be presenting complaint will be pain which will be worse at the night and relieved by the NSAIDs or the salicylate, and bone forming है तो there will be a dense sclerotic bone type का area होगा एक nidus के around. See in this X-ray you can easily appreciate कि yes, this is a classical osteoid osteoma in which you can see this nidus here and उसके चारों तरफ a dense sclerotic area. ओके, सो डायग्नोसिस जो होगा वो वैसे ही होगा, क्लिनिकल हिस्ट्री क्लिनिकल एग्जामिनेशन को एक्सरे फाइंडिंग के साथ कोरिलेट करना है. ट्रीटमेंट इज एक सिंपल एक्सीजन बट the recurrence is not there, prognosis is good and it is not a pre-malignant condition. Now osteoblastoma, नाम से पता चल रहा है osteoblasts होंगे, so there will be, it is also a bone forming benign type of tumor and osteoma होगा, so there will be more vascular proliferation and new bone formation here, and most common site is jaw and spine. Very important, jaw and spine के में सबसे common होता है, and if it is in the long bones it can be in diaphysis or metaphysis but never in the epiphysis. Young adults में होता है वो aching and nagging pain is the most common complaint, and यहाँ पे भी एक लाइटिक लीजन होता है बट नॉट लाइक अ निडस, इट इज नॉट अ निडस एंड इट इज सराउंडेड बाय माइल्ड स्क्लेरोसिस, है ना. वहां पे स्क्लेरोसिस ज्यादा था ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा में, इसमें स्क्लेरोसिस जो होता है वो कम होता है. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज योर osteoblastoma and the treatment of choice is your curettage. Okay, treatment of choice is your curettage. Now chondroblastoma, नाम से पता चल रहा है, it will be a cartilaginous benign tumor of bone and it is also a forming not a lytic type of lesion, and the characteristic feature is it is a cartilaginous tumor but it will have multiple calcium deposits. Young adults and epiphysis में common होगा. इसको ऐसे याद रखना कि cartilage जो होगा वो epiphysis में ही ज़्यादा होता है, ठीक है. So it is in the epiphysis around the knee, that is proximal tibia and the distal femur. Okay, and it is also a lytic lesion like that of the, okay, it is a lytic lesion with a zone of sclerosis. Here you can see, yes, here you can see the in the epiphyseal region in young age group of the knee joint. Here you will have the chondroblastoma. Okay, it is a lytic lesion, cartilaginous forming. Okay, so now next is the hemangioma of the bone and ये most commonly होता है vertebral column में, that is in the lumbar. Okay, vertebrae and the skull young adults में सबसे common होता है and lumbar vertebra में, and obviously vertebra में कोई भी tumor होगा तो the feature will be the neurological complications due to the compression of the spinal cord. And वर्टिब्रल कॉलम में कोई भी बोन की पैथोलॉजी हो, द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज रेडियोथेरेपी. ओके, एंड इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो आपको एमआरआई में मिलता है, दैट इज जो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइशंस होते हैं दे विल बी एब्सेंट एंड देयर विल बी मोर प्रोमिनेंस ऑफ द वर्टिकल स्ट्राइशंस एज यू कैन सी इन द इमेज. ओके, नाउ सेकेंड एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन इस टॉपिक में से, एंड द टॉपिक इज जाइंट सेल ट्यूमर और ऑस्टियोक्लास्टोमा. रिमेंबर जाइंट सेल ट्यूमर है तो देयर विल बी जाइंट सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल, और ऑस्टियोक्लास्ट आर ऑल्सो मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स, तो इसलिए इसको ऑस्टियोक्लास्टोमा भी बोलते थे बट इट इज अ मिसनोमर बिकॉज इट इज नॉट अ ट्यूमर ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट. ओके, ठीक है. अब दूसरी बात, एज प्रेजेंटेशन. जो एज ग्रुप प्रेजेंटेशन होता है ये जनरली मोर देन 15 ईयर्स में होता है, बिकॉज ये उन्हीं में होगा जिसमें एपिफाइजियल प्लेट जो होता है उसका फ्यूजन ऑलरेडी हो चुका होता है. जिसमें फ्यूजन हो चुका होता है उसी में ही ये होता है, and it is in the metaphyseal area, not in the epiphyseal area first. And
सेकेंड एपिफाइजियल फ्यूजन के बाद ही होगा। थर्ड, देयर इज वेरी हाई चांसेस ऑफ रिकरेंस एंड इट इज लोकली एग्रेसिव। तो इसका जो भी एक्सीजन करते हैं उसमें यू हैव टू टेक अ नॉर्मल बोन का मार्जिन with it and there are chances of recurrence, okay, but it is benign, okay. 20 to 40 years after the physeal fusion, most common site is around the knee, sorry, proximal tibia and distal femur, ठीक है। इसमें लिखा है द ट्यूमर इज लोकेटेड इन द एपिफाइसिस, बट एपिफाइजियो मेटाफाइजियल जंक्शन पे होता है मोस्ट कॉमनली। और अगर दोनों में से भी आपको चूज करने को आए तो प्लीज चूज द मेटाफाइसिस, ओके। एंड obviously lytic lesion है, so bone can get weak and sometimes the presenting feature may be the pathological fracture. Now एक और important बात कि ये जो होता है these are eccentrically located, means centrally नहीं, eccentrically see, ये eccentric location अगर central होता तो यहाँ पे होता in center, which is not, it is eccentrically located, ओके। डिस्टल एंड रेडियस का है विद सोप बबल अपीयरेंस इन द एक्सरे, वेरी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फाइंडिंग ऑफ द GCT is your soap bubble appearance, okay. This is your giant cell tumor and here you can see there are multinucleated giant cells. This is a giant cell tumor. Now diagnosis clinically फीचर्स तो बहुत लेट आते हैं और कम भी आते हैं, जस्ट यहाँ पे एक नैगिंग पेन या डिफॉर्मिटी होती है, एक्सरे कराते ही यू कैन इजीली डायग्नोज कि हाँ ये है। कैसे, एक तो सॉलिटरी लाइटिक लीजन होगा, ठीक है, सॉलिटरी लाइटिक लीजन होगा, बट ऐसे सॉलिटरी लाइटिक लीजन जिसमें जो कि क्या होगा, लोक्यूलेटेड, इसेंट्रिकली प्लेस्ड एंड एक्सपेंसाइल लीजन, कॉर्टेक्स तो एक्सपेंसाइल ऑलमोस्ट और भी अदर बहुत लाइटिक लीजन्स में हो जाता है। व्हाट इज एक्सपेंसाइल कॉर्टेक्स? एक्सपेंसाइल कॉर्टेक्स कोई भी लाइटिक लीजन होगा, सो ऑब्वियसली it will grow and when it will grow it will push the cortex, so this is called as expansile cortex, okay. There will be soap bubble appearance and very importantly there will be no calcification and there will be no new bone formation or there will be no periosteal reaction, okay. Now treatment, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और बट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, तो जस्ट रिमेंबर कि ट्रीटमेंट का कैसे अपन करेंगे कि जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, अगर सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस विल बी एक्सीजन ऑफ द ट्यूमर, कंप्लीट एक्सीजन फॉलोड बाय ग्राफ्टिंग, ओके। बट द ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द साइट ऑफ द ट्यूमर। अगर डिस्टल अल्ना है और फिबुला है, ऐसी बोन्स विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द फंक्शनैलिटी लाइक डिस्टल अल्ना और द फिबुला, तो यहाँ पे ओनली एक्सीजन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। बट डिस्टल एंड रेडियस और प्रॉक्सिमल टिबिया है जो कि फंक्शनैलिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आफ्टर एक्सीजन यू हैव टू डू द रिकंस्ट्रक्शन, okay. You have to do the reconstruction and that reconstruction can be by turnoplasty procedure, okay. That is arthroplasty, where you try to reconstruct the joint by autograft, allograft or even by the prosthesis. Or second or third one is the curettage, and curettage के बाद generally you do the bone cementing, but curettage have वेरी हाई चांसेस ऑफ रिकरेंस बिकॉज एक्सीजन नहीं कर रहे हो आप, सिर्फ क्यूरेट से वो हटा रहे हो, तो ऑब्वियसली देयर विल बी हाई चांसेस ऑफ रिकरेंस। और उसको कम करने के लिए यू पुट द बोन सीमेंट, बिकॉज बोन सीमेंट से क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस अ थर्मल इफेक्ट विच डिस्ट्रॉयज द ट्यूमर सेल्स, ओके। एंड अगर बहुत ही ज्यादा है एंड वेरी एग्रेसिव ट्यूमर्स है तो देयर इज एम्पुटेशन, एंड इफ इट इज इन द वर्टिब्रल कॉलम द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस विल बी द रेडियोथेरेपी। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो होता है वो साइट के हिसाब से हो जाता है, लाइक
we have discussed this already. Okay, now second is next is we are coming to the malignant tumors, and most common malignant tumor, primary malignant tumor of bone is multiple myeloma, and second is the osteosarcoma. Bone forming होगा, इसको osteogenic sarcoma भी बोलते हैं. It is of two types, that is primary and secondary. Primary, if bone में और कोई pathology present नहीं है, then it is primary. Okay, and it is commoner than the two, and in young adults वाली population में there is no pre-malignant condition required, and malignancy is higher than the secondary osteosarcoma. And secondary osteosarcoma in the elderly population के अंदर होगा firstly, and it is associated with other conditions which are already present, like Paget's disease or endochromatoses, dysplasia, history of irradiation to the bone or osteochondroma, etc. And on the basis of histomorphology, चार तरह के होंगे: osteoblastic, cartilaginous chondroid, fibroblastic, fibrous, and very important and most dangerous and with the worst prognosis is the osteolytic type, which is also called as the telangiectatic type. Okay, now मेटास्टेसिस इज थ्रू हेमाटोजेनस रूट, एंड रिमेंबर लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत अनयूजुअल होता है. ठीक है, एंड द एज ऑफ ऑनसेट इज the young adult 15 to 25 years of the age, and इस एज में मोस्ट कॉमन मस्कुलोस्केलेटल malignant tumor पूछे तो obviously that will be osteosarcoma, and most common site is your knee वाला area, that is your distal femur and proximal tibia. Okay, and gross appearance की बात करें तो grossly इट अपन जो भी बात करेंगे वो सिंपल ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा की बात करेंगे, उसके जो बाकी के 3 और वेरिएंट्स देखे अपन ने उसकी बात नहीं करेंगे. तो ऑस्टियोब्लास्टिक इज ग्रेइश व्हाइट हार्ड एंड ग्रिटी फीलिंग वाला ट्यूमर होगा. कॉन्ड्रॉइड वाला विल बी ओपेलेसेंट एंड ब्लूइश. फाइब्रोब्लास्टिक फिश जैसा फ्लैशी सा लगेगा, एंड टेलेंजिएक्टेटिक टाइप विल हैव एरियाज ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस. ओके, so and the clinical features, pain usually first symptom hota hai, and there will be gross swelling, and that gross swelling will be progressive. Okay, and remember, mostly the tumor arises in the metaphyseal area. Okay, metaphyseal area mein hoga, and the skin will be shiny with prominent veins, warm and tender. Okay, here you can see this is a classical osteosarcoma, and there is increased periosteal reaction, which is its classical feature. Okay, periosteal reaction is the classical feature of osteogenic sarcoma, वो अपन अभी आगे देखेंगे. See, this is osteogenic sarcoma. There will be nuclear atypia, and there will be pleomorphic cells here, with occasional giant cells also, and in telangiectatic areas of necrosis and hemorrhage will be more. Here you can see pleomorphic cells with nuclear atypia present, and it is a lytic type, sclerotic type, mixed pattern, and सब में the common feature जिससे इसका diagnosis करोगे that will be the periosteal reaction. Here you can see the gross that we have discussed. Okay, now radiological, तो classical finding जो होगी, there will be destruction of the metaphyses, and osteogenic है तो इसका एक और classical feature होगा, that is there will be new bone formation, and that will be seen as the periosteal reaction. Okay, but दूसरी periosteal reaction से ये different क्यों है? Because first it is irregular, and second it is very intense. Okay, and this periosteal new bone जो बनती है वहाँ पे you can have this Codman's triangle also. Okay, so this is a feature. It is also present in Ewing sarcoma and other conditions. So ये new bone formation की वजह से see here एक Codman triangle बन गया, and sun ray appearance because there is new bone formation. So the periosteum will unable to contain the tumor, and उसको ये तोड़ के the periosteal reaction, the new bone formation
will go into the adjacent soft tissues, and वहाँ पे it will give a sun ray appearance in the X-ray, very classical of the sarcogenic tumor. Here you can see the sun ray appearance. Okay, alkaline phosphatase will be elevated, and biopsy say you will get the confirmation. Okay, and in histologically new bone formation is pathognomic. Okay, with nuclear atypia and other signs of the carcinoma, and the most common site of metastasis is the lungs. Now, what is the treatment of choice? Treatment of choice is amputation. But nowadays, limb saving surgery आप कर सकते हो if you diagnose it in the early stage, and it is on the rise because with newer technologies, more and more अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा इज हैपनिंग. बट उसमें एक प्रॉब्लम होती है लिम्ब सेविंग सर्जरी में, एंड द लिम्ब सेविंग सर्जरी में जो प्रॉब्लम होती है, दीज आर द स्लिप एरियाज. तो ये स्लिप एरियाज क्या होते हैं? जो मैरो कैविटी होती है उसमें आपने लीजन को एक्साइज कर दिया है एंड आपने वाइड मार्जिन से ही एक्साइज किया, बट स्टिल सम ट्यूमर टिश्यूज मेडुलरी कैविटी के दूसरे पार्ट्स में दे स्लिप, and there's the called the slip areas. So वो slip areas में तो tumor है ही even after doing the limb saving surgery. So keeping in mind the slip areas, so इसके treatment के लिए with the limb savings operation you also go for the chemotherapy. Okay, so you also go for the chemotherapy. So यहाँ पे भी जो treatment of choice होगा वो clinical scenario पे, history पे and question पे depend करेगा. ओके, बट अगर आपसे सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछा है तो एम्प्यूटेशन के साथ ही जाना. एंड जो आप एक्सीजन के लिए मार्जिन लेते हो, यू टेक मार्जिन ऑफ 10 सेंटीमीटर. रेडियोथेरेपी जनरली लोकल कंट्रोल के लिए होता है, नो लॉन्गर यूज, बट इफ इट इज इन द वर्टिब्रल कॉलम दैट इज वेरी रेयर, रेडियोथेरेपी इज द चॉइस. कीमोथेरेपी अपन ने देखा है स्लिप एरियाज या माइक्रो मेटास्टेसिस को रोकने के लिए होता है. Okay, nowadays immunotherapy is also in the trial phase for the osteogenic sarcoma. Prognosis is poor. 5-year survival rate with surgery alone without chemotherapy is just 20%, and with chemotherapy it is 70%. Osteogenic sarcoma we have already discussed. Now the Ewing sarcoma. Ewing sarcoma, very important, highly malignant, more malignant than the osteogenic sarcoma. Young adults वाली population के अंदर ही होगा. Okay, and the bones affected, most commonly the bones affected will be of the pelvic region, and अगर long bones affect होगी it will be of the diaphysis. and grossly देखें तो osteogenic के comparison में this Ewing's का में क्या होगा grossly में? First it will be more larger and it will be having pus like area. ओके, है ना, बीच में ग्रे वाइट तो होगा, हार्ड ही होगा, बट लेस हार्ड, एंड बीच बीच में देयर विल बी सॉफ्ट एरियाज, यानी पस लाइक एरिया होता है. तो इसलिए इससे याद रखना कि फीवर इज अ कंप्लेन ऑन प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ ईविंग सार्कोमा, इसलिए यू हैव टू डिफरेंशिएट इट विद द ऑस्टियोमाइलाइटिस. एंड कैसे डिफरेंशिएट करोगे? ऑस्टियोमाइलाइटिस में यू विल हैव 3 important radiological features which will be absent here, which cloaca. Okay, you will have the cloaca, the new bone formation, the involucrum, the sequestrum. अब कौन सी चीज क्या होती है? Sequestrum is the necrotic or dead bone, infected necrotic dead bone, sequestrum. और ये sequestrum बाहर निकलता है through a sinus that is called as the cloaca, and involucrum is the new bone formation. Okay, so histopathologically वहाँ पे pleomorphic cells थे, यहाँ पे there will be uniform cells like lymphocytes, and it will form the pseudo rosettes की lymphocytes चारों तरफ हैं, and ये देखो lymphocytes like cells which are the tumor cells, highly malignant, and इसके बीच में there is this area of necrosis, and this forms the pseudo rosette. Okay, so here you can see in x-ray or the skygrams radiologically you will see the
Codman's triangle, the moth-eaten appearance and the onion peel appearance. ये क्या है? Periosteal reaction. वहाँ पे irregular थी ना, यहाँ पे भी irregular नहीं होती है. It is in a layer form giving a onion peel appearance. Periosteal reaction से Codman formation and lytic lesion जैसी पिक्चर होती है. So there is moth eaten appearance. Okay, here you can see flat bones pelvis में Ewing sarcoma. This is the gross of the Ewing sarcoma. Okay, now clinical features, वही same clinical features होंगे, pain and the deformity and the